Suppose you are living in a world जहाँ this one black dot is equal to $1 million. And this is what CEOs of top companies like Apple and Microsoft are making in a year. This is a milestone किसी भी company के लिए to be in a list of unicorns. And this is the entire net worth of Jeff Bezos. Even though they are on the top of money game, तुमने इन सबको कभी शो ऑफ करते हुए नहीं देखा. No, they don't do that. But they do. अगर तुम्हारे पास पैसे कि आपकी हो सकता है दाढ़ी आने से पहले गाड़ी आ जाए और किसी का पति बनने से पहले करोड़पति बनेंगे आप. नहीं है, सपोर्ट करने वाले लोग नहीं है, कभी जिंदगी में पैसा नहीं कमाया, चुपचाप से नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लो, कोई और रास्ता नहीं. लोहे के सिक्कों से लेकर पेपर नोट्स तक जितने पैसों के रूप नहीं है उनसे ज्यादा उन्हें बनाने के तरीके. पर इन तरीकों में एक चीज सबसे कॉमन है, टू सेल. अ जॉब पर्सन सेल्स हिज टाइम एंड एक्सपीरियंस, जबकि एक बिजनेसमैन सेल करता है एक प्रोडक्ट और एक आइडिया. और इन सब के बीच में आते हैं कुछ ऐसे सो कॉल्ड लाइफ कोचेस हु आर सेलिंग यू अ होप. Your brain is a basic energy, but it needs more than the blood flow to get moving. It needs hope, motive, or anything you say. You go to work because there is a motive of money behind it. You go to an institute or you send someone to study because there is a clear motive behind it. The hope of getting a job, the hope of being well settled, the hope of being something. But there comes a phase in life when a person feels like everything in the world is useless. A fucked up phase we call डिप्रेशन. अगर तुम कभी डिप्रेशन में गए हो या फिर किसी को देखा है डिप्रेशन में, तो उनमें काफी चीजें कॉमन पाई जाती है. फर्स्ट, देयर इज एन एब्सेंस ऑफ एब्सोल्यूट एनर्जी इन द बॉडी. सेकंड, उस इंसान के लिए द वर्ल्ड हैज बिकम अ वॉइड व्हिच हैज नथिंग टू ऑफर. और अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो दैट पर्सन इज इन एन एब्सोल्यूट स्केर्सिटी ऑफ होप. The reason why I'm telling you about this is if you have ever been into such seminars, हो सकता है कि तुमने नोटिस किया हो कि वहाँ पर दो तरीके के लोग होते हैं. First, those who come from middle class or utter poverty. Second, students or teenagers. Ones are those who want to have a better life for themselves and their families, to show the world that they are not failures. And the other ones are those motivated teenagers exploring themselves and finding the meaning of life. In both cases, the victims are in search of hope. The hope of getting rich, the hope of finding an opportunity, the hope of being well settled. And that is what they are being sold. आज हम एक कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं. मतलब जिसके पास में कैपिटल यानी पैसा है उसके पास में होता है फ्रीडम. फ्रीडम कहीं भी जा सकने का, फ्रीडम कुछ भी खरीदने का, फ्रीडम कुछ भी करने का. पर कुछ लोग इस फ्रीडम को मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं फ्रॉम हैप्पीनेस. दोज हु हैव मनी हैव लेविश लाइफस्टाइल्स, बिग विलास, लग्जरी कार्स, हाई सिक्योरिटी, वीआईपी स्टेटस, गुड हेल्थ केयर एंड गुड अपॉर्चुनिटी. एंड देयर्स यू watching the light from the distance, trying to compare yourself with them, saying I'm not like them because I was born in the wrong family, I'm not talented enough, I'm unlucky, maybe God doesn't like me. But hey, stop. Then you see someone on the internet saying once how he was like yourself and now he has made tons of money recently and now he has lavish lifestyle, big villas, luxury cars, high security, VIP status and everything you are desiring for. And yeah, he will teach everything how he did and now you can do it too. In other words, he gives you a hope. The root of all the sufferings are desires, says the Buddha. इंसान को केवल कर्म करने का अधिकार है, उसके फल के बारे में चिंता करने का नहीं, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं. ये दोनों बातें भले ही अलग धर्मों और अलग युगों में कही गई हो, पर इनका मेन एसेंस यानी कि मूल एक ही है, that the desires could be evil. तो क्या इसका मतलब ये है कि किसी को कुछ करने की आशा ही नहीं करनी चाहिए और हम जहाँ हैं जैसे हैं उसी में सेटिस्फाइड होकर रहना चाहिए? शायद नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इंसान कभी स्टोन एज से बाहर ही नहीं निकल पाते. ना किसी ने आग जलाना सीखा होता, ना हम कभी स्पेस और टाइम के बारे में जान पाते. यानी कि दिक्कत खुद को आगे बढ़ाने और खुद के बारे में सोचने में नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो तुम अभी भी पत्थर रगड़ रहे होते, ना कि इस वीडियो पर. तो दिक्कत कहीं है, तो वो है इन फॉल्स एंड इम्पोज्ड डिजायर्स, वेयर कीवर्ड्स आर फॉल्स एंड इम्पोज्ड. आज तुम कहीं पर भी चले जाओ, चाहे इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर लोगों से बात कर लो, इट्स लाइक एवरीवन वांट्स टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर. वही बड़ी बड़ी बातें लाइक 9 to 5 इज फॉर लूजर्स, हैव अ रिच माइंडसेट, बी योर ओन बॉस,
कुछ बड़ा करने की आशा। द थिंग इज दैट 80% ऑफ पीपल जो ऐसा बोलते हैं, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सीइंग पीपल ऑन द इंटरनेट। द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु वांटेड टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर either don't have any problem solving product, or the product is a complete garbage which only gives them a title of being an entrepreneur. Because that's the problem that comes when you are borrowing thoughts from an online market. तुम किसी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन के खुद को एंटरप्रेन्योर नहीं बोल सकते। जो लोग भी ऐसी किसी साइकिल्स में फंसे हैं, उन्हें ये फील कराया जाता है कि वो लोग कुछ अलग कर रहे हैं, वो सबसे अलग है। जो लोग लेट से 9 to 5 जॉब करते हैं या फिर उनके स्कीम में ज्वाइन नहीं होना चाहते, they think that these people are losers, a herd of negative mindset people. Oh, look at those Macambo! In reality, it is not. If everyone is a billionaire, then no one is. Reading basic self-help books on finance doesn't make you competent to become a businessman, nor buying someone's course will. Well, humans have always been tribal beings. We always needed someone to lead the crowd. That's why we have democracy, religious gurus, kings and emperors. Throughout history, लोगों को लगा कि there should be someone जो कि हमसे ज्यादा समझदार और superior है, जिसे ये अधिकार होगा सारे के सारे vital and risky steps लेने का। Suppose कि तुम एक राज्य में रहते हो और अचानक उस पर हमला आ जाए, तो अब सारी responsibility आ जाएगी राजा के ऊपर। He will have the risk, responsibility, stress or anything that the problem will bring to save people's life, and in return he will have the power over people. More risk means more reward. A simple equation. The same happens now. आज भी हम ऑनलाइन लोगों को देखते हैं और हमें लगता है कि ये इंसान हमसे ज्यादा समझदार है, ये हमें बता सकता है हाउ टू गेट रिच, ये पहले से अमीर है और उन्होंने अपना जो सीक्रेट है वो रैप करके रखा है कोर्स में जिसकी प्राइस है $2000 एंड पीपल बाय दैट शिट एंड गेस व्हाट, नथिंग हैपेंस। द थिंग इज दैट अगर कोई तुम्हें बता रहा है हाउ टू गेट रिच, पैसा कैसे कमाए, तो मैक्सिमम चांसेस है यू विल फेल, क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस को पता है कि जो तुम ये कर रहे हो दिस इज नॉट यू। ये जो तुम टैगलाइन लेके घूम रहे हो ये तुम्हारी नहीं है, ये तुम्हें किसी ने तुम्हारी बताकर बेची है। और जब तक तुम्हारे सबकॉन्शियस को ये फुली एक्सेप्ट नहीं होगा कि जो तुम कर रहे हो वो तुम हो, तुम्हारी ही चीज कर रहे हो, तब तक उसमें एक चीज नहीं आएगी, वो है ऑब्सेशन। जाकर किसी को भी देख लो, चाहे इलॉन मस्क हो या फिर माइक टायसन हो, इफ दे आर सक्सेसफुल नाउ दे वर ऑब्सेस्ड देन। Before I go further, let me have your facts check. What do you mean by being rich? Maybe you say $1 million of net worth is a good amount for a person to say he's a rich. But if you compare them with Mark Zuckerberg, Mukesh Ambani, this person will look poor. So the first thing is that you cannot define how you define rich, and by numbers, not at all. So my definition of being rich would be, if you can buy the things you want to buy, then you are rich. Listen it again if you could not get it. और आगे के लिए हम इसी definition को use करेंगे to define being rich. And here is your second fact check. You don't need to be an entrepreneur to get rich. Okay, I know what you have always been hearing. Startup करो, बड़ा सोचो, अलग करो. Well, the thing is not, because in India, sometimes a shop owner makes more money than a startup owner with less stress and high success rate. So now if you have understood these basic things, I would urge you to find yourself, the guy who is watching the video. Who are you and what are you? Are you a guy who's flexible and likes to play sports? Well, find yourself if you suits in that, because sports owners are very good in numbers and they are not running any companies too and not doing anything different also. And if you are a guy who likes to study and can explain things very well, you can be a teacher. And before you say anything, those who are teachers by choice are making more than these MLM gurus. The keyword is by choice, not by compulsion. And if you are someone who does not know what to do and how to find yourself, well, it won't make any difference if you are 18 and unemployed, or you are 20 and still unemployed. If you give 2 years in doing stuffs and finding what you are, eventually you will be rich and satisfied both at the same time. Listen, you don't have to be like Elon Musk. You don't have to be like anyone. You just have to be you. And that's what it means. On the final note, I'm glad that you stick to the very end, and I give you the hope that you will find what you truly are.